WTC फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला दिन, डे वन। इंडिया काफ़ी पीछे है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डोमिनेट कर रहा है। नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फैंस। 327 फॉर 3। टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग ली। पहले सेशन में 2 विकेट, बाद में 1 विकेट, एंड देन अ ड्राई स्पेल फॉर इंडिया। Similar situation happened in Chennai 2001. Australia was cruising at the end of the first day around 325 odd with 3 wickets down. They were bundled out for 390 the second day, and India went on to win the test. Let's keep our fingers crossed. चेन्नई विद मल्टीपल स्पिनर्स अलग बात है, लेकिन इंग्लैंड में जहाँ एक ही स्पिनर खेल रहे हैं और 4 सीमर्स जिनका अभी तक तो लग नहीं रहा कुछ अच्छा बॉलिंग चल रहा है, तो Yes, probably Rohit Sharma and Rahul Dravid missed the trick. They read the pitch completely wrong, is what I feel. हर बार होता है ना। पिछली बार WTC फाइनल में 2 स्पिनर खिलाए तो बोले मिसरेड द पिच। नाउ व्हेन यू प्ले 1 स्पिनर एंड 4 सीमर्स यू से मिसरेड द पिच। या तो हम रिजल्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, इसके लिए हम गलत एनालिसिस कर रहे हैं, या वो जेन्युइनली पिच गलत रीड कर रहे हैं। बट यस, very good day for Australia and an absolute ordinary day, or to say the least, for India. I mean, looking at the score, it looks scary. Definitely, the signs look ominous. But ये भी है कि अभी एक ही दिन हुआ है, 4 दिन का खेल बाकी है। तो 2001 चेन्नई टेस्ट की बात की, बट मेरे ख्याल से आप बहुत सारी ऐसी मैचेस एग्जांपल दे सकते हो। आई थिंक एडलेड में भी ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने 500 से ऊपर रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में 2004 में। Yes, and they lost. Yes. And they lost. So बहुत जल्दी है अभी रिजल्ट के ऊपर बात करने के लिए, फॉर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द मैच। बट श्योरली अभी तो ऑस्ट्रेलिया इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, दे आर इन द ड्राइवर सीट, एंड इंडिया विल really need to pull up their socks पहले सेशन में। आज जो पहला सेशन होगा सेकंड डे का, तो उनको चाहिए कि 3 विकेट कम से कम निकाले पहले सेशन में, हेड को निकाल दे और फिर ऑस्ट्रेलिया को कैरी नहीं करने the words. What play? Good. तो अभी डे वन के एंड पे विन प्रेडिक्टर क्या बोलता है? कल जब तक मैं ट्रैक कर रहा था, कुछ एंड में 73% ऑस्ट्रेलिया चल रहा था प्रेडिक्शन। आई कुडंट सी एट द एंड ऑफ द डे। That's bound to happen, Bhumit. When you are in a strong position, your win prediction obviously goes high. To be fair to Rohit Sharma, I would say on the toss, you could say that it was overcast conditions, cold, and with the pitch that was in question since 2-3 days, a green pitch with a lot of grass on it. Even after losing the toss, Pat Cummins said that he would have bowled first had he won the toss. Yeah. And, see, we cannot blame Rohit Sharma for choosing to field first, having won the toss. Because had we opted for bat, it could have misfired. And though the bowling has misfired now, but see, we are coming into this test after a long IPL season. Bowlers bowled not more than 4 overs a day, and now they are bowling more than 15 overs a day. So 4 times the work pressure, work burden, I would say. As Bhavik said, yes, the first hour would be crucial today. If at all we are able to get some, we have already taken a new ball yesterday, and just 5 overs of the new ball, and today would be something that the Indian bowlers would be would be expecting to make the most out of what they have lost yesterday. Let's expect some 2 to 3 wickets in the first session, and probably we can come back into the match. तो 2 क्वेश्चन है मेरे। आईपीएल, खास करके जब आईपीएल की बात आती है उसको लेके, व्हाट वुड यू प्रेफर कमिंग इनटू WTC फाइनल? एक बॉलिंग अटैक जिसने पिछले कई महीनों में कोई भी बॉलिंग नहीं की है, कंप्लीटली रेस्टेड है, या एक बॉलिंग
स्पेल या बॉलर्स जिन्होंने एटलीस्ट आईपीएल में 4 ओवर डाले और काफ़ी हद तक रेगुलर प्रैक्टिस में रेगुलर टच में, तो जिनकी लाइन काफ़ी ज़्यादा सेट होगी। और अगर आप शमी और सिराज को देखें तो आईपीएल में भी वो लोग कुछ ज़्यादा अलग नहीं कर रहे थे, यही लाइन पे डाले जा रहे थे। तो इतना यूएन क्राई है कि आईपीएल में 4 ही ओवर डाले, अब यहाँ पे 20 डालनी है, लेकिन आई वुड प्रीफर कि एटलीस्ट आईपीएल में 4 ओवर तो डाल के आ रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक कंप्लीटली रेस्टेड आउट है, उनको इतनी मैच प्रैक्टिस भी नहीं है। नहीं, दो चीजें हैं इसमें। अगर आप प्रैक्टिस की बात करो, डेफिनेटली इंडियन बॉलर्स के पीछे बहुत सारी बॉलिंग है, मतलब उन्होंने बहुत सारी बॉलिंग की है, मैच प्रैक्टिस बहुत है, बट उसके साथ एक होता है मेंटल फटीग। when you play the cricket of as competitive as IPL is, where every game you are playing a competitive game, और 2 महीने तक इतना आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले हो, तो मेरे ख्याल से सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या मेंटल फिटिक का कोई असर है? बिकॉज आई मीन एटलीस्ट 3-4 इंस्टेंसेस आपको ध्यान में आएंगे पोस्ट आईपीएल वाली टूर्नामेंट्स। मैं आई गो राइट बैक टू 2011, जहां पे इंडिया वाज अ डोमिनेंट फोर्स एट दैट टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। वर्ल्ड कप जीते थे हम, उसके बाद आईपीएल, और उसके बाद व्हेन वी वेंट टू इंग्लैंड इट वाज एन एब्सोल्यूट ड्रबिंग। उसके बाद अगर आप रिसेंट T20 वर्ल्ड कप की बात करो, जो आईपीएल के इमीडिएट फ्यू मंथ्स के अंदर था, और आप अभी की या लास्ट WTC फाइनल की बात करो, या ये WTC फाइनल की बात करो, तो क्या मेंटल फटीग इज प्लेइंग अ रोल? क्योंकि मेंटली ये लोग डेफिनेटली ज्यादा फ्रेश होंगे। पर मैं अग्री नहीं करता ये पॉइंट से, क्योंकि हाँ, आपने जितने भी आगे के मैचेस गिनाए ना, उसमें बॉलर्स ने तो अच्छा ही किया था। आप पिछले WTC में भी देखो तो बॉलर्स ने तो अच्छा शो किया था। हम लोग ने नहीं न्यूजीलैंड को नहीं, मैं काफी, तो एज अ टीम ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और हम लोग इतना इतना मतलब पहले दिन पे इतना कह रहे कि बॉलर्स अच्छा नहीं थे, बट नॉर्मली आई थिंक इंग्लैंड में ये ट्रेंड होता ही है एटलीस्ट ये सीजन में, कि डे 1 इज यूजुअली लो एंड स्लो, और जैसे डे 2 डे 3 में ज़्यादा धूप आएगी, ज़्यादा इट विल बी मोर सनी, तो पिच थोड़ी फास्ट होगी। जब बॉलर्स, अभी कल हमने देखे ये लोग ने फिर भी काफ़ी एजेस, दे वर एबल टू प्रोड्यूस मेनी एजेस। इवन जब स्मिथ इतने सेट थे, लेबुशेन सेट थे, हेड को ट्रबल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्लो विकेट की वजह से वो एजेस पहुंच ही नहीं रहे थे कोई फील्डर के पास। वो जैसे डे 2 डे 3 आएंगे और हमारी बैटिंग आएगी तो विकेट भी फास्ट होगी, एजेस आएंगे, और जो फील्डर के पास पहुंचेंगे भी, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए भी रहेगा। लेकिन आई थिंक बॉलर्स ने फिर भी काफी अच्छा स्पेल डाले थे। कंसिस्टेंसी नहीं था, विच इज अ फैक्ट, बट द See, स्पेल्स, देयर वर we स्पेल्स are ऑफ both गुड set बॉलिंग। of bowlers. Right, we are both a set of bowlers. When you say Siraj and Shami, who are bowled lot of overs into IPL, they came into the match bowled pretty well. And when Bhavik says that they should be physically fit and mentally fit as well, and not fatigued. Umesh Yadav didn't play that many matches, but करेक्ट। the way he bowled, see, it's always a question mark, right? And let's see how Australian bowlers bowl on this wicket, and how far they go with taking the wicket. I'm sure they'll be successful, not the way how Umesh has bowled. But they, in hindsight, we can talk about ये हुआ होता तो अच्छा होता, ये हुआ होता तो अच्छा होता. We can now talk that Ashwin को लिया हुआ तो अच्छा होता. But then, see, इम्पैक्ट प्लेयर ले आओ। Ashwin played in WTC the last finale, but he took 2 wickets. He was very crucial in the way he bowled. Or number one test bowler is still, you'll have to keep him out considering the मैच सिनारियो, कंसिडरिंग द विकेट एंड एवरीथिंग. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हुआ होता तो अच्छा होता, ये हुआ होता तो अच्छा होता. बट देन अगर अश्विन खेले होते, ये सिनारियो होता, तो हम फिर से बोलते कि यार 4 पेस बॉलर की विकेट है. हाँ। सो see, there's always going to be ifs and buts with this. You always make the best out of what you have, and I'm still keeping my fingers crossed that the first hour today would be really crucial. If we get a early breakthrough, at least 2-3 wickets during till the lunchtime, we can still come back in the game.
But ये भी है कि you have to give credit where it's due. The way especially Travis had batted. Because lunch के बाद immediately first over में I think yes second over में Shami got Labuschagne and उसके बाद the way he came and counter attacked I think और वो भी उस वक्त जब there was more assistance for the bowlers तो उस वक्त आके ऐसा aggressive approach करके खेलना एंड हेड खेल रहे हैं ऐसे ही पिछले 3-4 सीरीज से ऐसे ही खेल रहे हैं कंसिस्टेंटली तो व्हाट अ नॉक एंड दैट टू ऑन वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल डे 1 वाओ सुपर्ब नॉक सो हेड ट्रेविस हेड ने 2022 नवंबर के बाद आई थिंक जो दिख रहा है यहाँ पे वो स्टैट्स उनके 14 इनिंग्स 906 रन्स एट द एवरेज ऑफ 82 और उससे भी बड़ी बात है उनका स्ट्राइक रेट जो है 87 ऑलमोस्ट 87 का हाँ तो मतलब सिर्फ रन स्कोर नहीं कर रहे वो गेम खींच रहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ हाँ और करेक्ट अच्छी इनिंग में करेक्ट एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी सॉ यस्टरडे आल्सो जैसे ही हमने अच्छी बॉल डाले हेड को थोड़ा ट्रबल किया उसके बाद ही वुड इमीडिएटली बाउंस बैक ऑन एंड अटैक आवर बॉलर्स और ऐसा नहीं कि एक आध चौका निकालेंगे वो आएंगे और एक साथ 3-4 चौके निकल जाएंगे जिससे पूरा उनका जो हमारे बॉलर्स की रिदम थी वो पूरी अपसेट हो जाती थी फिर देन टिल अगेन हैव टू वर्क ऑन सेटिंग हिम अप अगेन बट तब तक में वो फिर से रन स्कोर कर जाते थे एंड दैट केप्ट गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे ऑल्सो ये भी था कि शायद उमेश और शार्दुल की इनकंसिस्टेंसी से भी थोड़ी हेल्प मिल गई उनको शार्दुल की तो हाँ। इनकंसिस्टेंसी होती है जो विकेट ले जाती है जब तक वो अच्छे बॉल डालते हैं उनको विकेट्स नहीं मिलती है वो अच्छे बॉल डालने जैसे के बाद वार्नर जब का आउट किया एक खराब बॉल डालते हैं तब उनको विकेट मिलती है And Umesh, what I feel is a better bowler in Asian conditions, या uh, where the ball reverse swings after it gets old, and he's a little force when it comes to bowling in Indian conditions or say Asian conditions, and he has always struggled uh, whenever he plays overseas. I mean, the first spell, the second spell, whenever he comes on, he has shown rustiness, and I'm not sure why they experiment with Umesh Yadav, though he is a very seasoned bowler, but somehow his record in the overseas conditions is always a question mark. Still, I know we didn't have many options with us, but could have added again. This is in hindsight. We could talk that they could have added Unadkat, given some variety to the bowling and everything. But Unadkat, he brings with him a lot of domestic experience, and he has bowled a lot leading up to the IPL. Though he got injured midway, but I feel his bowling experience could have come handy in these conditions. Well, to be slightly fair to management, I think Umesh did very well last England series when we played there. So that could have been one of the reasons which would have inspired Umesh's selection. And obviously, we didn't have our front choice of bowlers. Bumrah was not there; otherwise, there was no way Umesh would play. So just talking about Travis Head, that is exactly the same role Rishabh Pant would have played for India. Yes. Not to be, but somebody will have to take that bat and play that kind of innings whenever India get to bat. Because that, unless that intent is shown, Australia in this position, from this position onwards, will really push you down. Otherwise, unless you take an aggressive approach up front. So, anyways, let's talk about day 2. Predictions for day 2. Before we go there, there was no mention of Steve Smith, the way he batted. Oh yes.
See, Head certainly took all the bowlers to the cleaners, but Steve Smith ensured that he was there on the other side, just knocking the ball around. There were good balls. We bowled pretty well in patches, but Smith actually defended all of those balls, and he, I mean, oval for him is like his second home, I would say. He has got a very good average on at oval, and at 95 not out, he is set for a big one. Let's hope not. We don't need another big one. So let's hope not. Yes. Bhumit, what's your prediction for day 2? I think they'll easily cross 500, and it will be pretty difficult for India to win from here. Let's see. I hope I am proved wrong. But I see big hundreds from these two. They still have Green and Carey to come, and they are no वो बोलते हैं ना कि फालतू players नहीं है. They are good players, and Green showed in the last match that he played against India at Ahmedabad how good a batter he is. So we are still expecting some more runs, but let's expect that luck favors Indian bowlers today. The nicks and the edges go to the fielders' hands safely, and by lunchtime, or say not by lunchtime, by tea time, we are into bat, not chasing more than 400, 420 in the first innings. Well, I would say Australia will be scoring somewhere around 470, 480. Close to that. Just under 500. And by the end of the day, India would be batting with around what? 100 for 2? No. All right, so that's our prediction. Let's hope the fourth highest partnership for Australia doesn't become their highest in this test match on day 2, and we'll be back with our day 2 analysis tomorrow. And for this entire test, actually, you'll be able to see us coming back with every day's analysis. And don't forget to share, like, and subscribe, and also let us know your analysis in the comments box. We are also interested in knowing that, and it should be a good chatter there also. 1, 2